Namaste. Once again, welcome to this live at 10 p.m. show of the Jaipur Dialogues. And we have Abhijit Iyer Mitra with us once again. I don't think you need any introduction to Abhijit. And you've been watching him almost everywhere. You watched him on the Jaipur Dialogues the other day. And that particular show has already done almost 1 lakh views. And today we have him here again. Namaste, Abhijit. How are you? हर हर महादेव महादेव की कृपा सब सुख मंगल है। हिंदुस्तान मांग रहा है चीन का आगे आप मांग रहा है चीन का वो बहुत भारी अपमान मांग रहा है चीन का अपमान। चलिए, बहुत अच्छा, ये आपका नया नारा। तो आपने कल देखा, yesterday we saw this banning of 59 apps. So banning of 59 apps for whatever it is worth, I read it as India joining the hybrid war. And till today, my impression was that India has been shying away from the hybrid war, and they were just taking it as some kind of a conventional military war. But China had always been trying in whatever way, whether it is very sophisticated or not so sophisticated, but it was trying its hand at the hybrid war. And hybrid war, I will later on ask Abhijit to explain the full concept of what is a hybrid war. But for the beginners, even I am a beginner for that matter in strategic matters, I am not as cool as Abhijit is, but I do try my hand at it. So a hybrid war consists of not just the military, it has the national power, it has the economic power, and it involves the trade war, it involves the military war, it involves the Psy War, the psychological war, as also the information war. Abhijit, what exactly is the hybrid war? Am I anywhere close to the definition? Yeah, very close, in fact. Hybrid war is what used to be called, think of it as a variation of total war in that sense, where you're just not using your military, you're using every level of your state power to do things. So some people would say, would use economic sanctions the way America does. Other people use, like China, use economic dependency. Because if you get rid of China from, if you stop selling Chinese imported products, your information economy collapses, because most of your Zomato, Swiggy, all your web apps, they mostly use Chinese, they depend on people using cheap Chinese equipment. You use irregular forces, so terrorism, for example. You stoke local unrest. You use information warfare, so basically using your own media against you. And sometimes the Chinese have never been very good at information warfare. They don't do information warfare in the sophisticated way the Russians do, but they're okay with it. They do cyber attacks like we saw them do on Australia. They use diplomacy when required to mask their true intentions. You know, there was a saying, I think it was a British Prime Minister who said it, old 17th, 18th century Prime Minister. Diplomacy is war through other means. Exactly. So, it's a combination of all these things. Now, the thing is, they all are calibrated very, very carefully. For example, either sanctions or, using economic dependency. They all get calibrated very, very carefully. And thankfully, the one good thing I can tell you is that China isn't exactly as accomplished at it as we think it is. So that's a good thing. Okay, so the salvo was fired by India by banning these 59 apps. Now, what do you think the Chinese are looking at this particular measure? From whatever I can gather, the way, in fact, most of my interpretation comes from Global Times. If
Global Times says something, then you have to really interpret it. And now, because it has become quite predictable, we are able to predict, read, and interpret what China is thinking. So the kind of juvenile reactions that we have seen in the Chinese state media, it looks like as this simple measure has rattled them quite a lot. I don't know if they're completely rattled, because they depend on the India's economic dependency. They know as well as we do on China is far too high. But there's two issues here. One is it sent a very clear message to investors in India that your investment is safe as long as you're on good terms with us. The moment you enter hostilities, your investments are no longer safe. All right. That is a fairly good message to send out in my books. But remember, it hasn't stopped at just 59 apps. Today, Nitin Gadkari ji has announced that there will be no Chinese companies or joint venture companies will be allowed to build roads in India. BSNL has withdrawn its tender. It is going to reissue a new tender. And I expect that what is going to happen is a whole bunch of smart measures where, we don't destroy the areas where we're heavily dependent on China, but we start restricting Chinese market access. So in the next 10 to 15 years, you can kick them out completely. I can tell you one thing very clearly: China is not getting that 5G contract in India anymore. This much is extremely clear. And the way they've gone about it is to do the same crude rubbish that they always do, which is go around offering every newspaper worth its all. And let's not forget, all newspapers and web portals are in serious doldrums ever since COVID started. The only advertisers they have these days are Savlon, Dettol, face masks. What other cleaning products? Colin and Harpic, I guess. Those are the only people realistically advertising at the moment. Did you notice a lot of papers carry Savlon and Dettol in the front page because their advertising, their tariff rate has come down drastically, and suddenly Dettol and Savlon can actually afford to advertise for all these things. So what it started with was a whole bunch of, they basically sent out PR agencies to get everybody to write human interest stories. Right. And what these human interest stories, what are they? Basically, the joke about human interest stories is when you have facts, you go with facts. When you don't have facts, you go with human interest. Human interest is when you know you're wrong and you're trying to create sympathy. Hai, bechara, dekho kitna ye hai. So, for example, if we were to turn this into a I don't know, let's take it to a horrible incident, the Bhopal gas tragedy or something like that. Who was the man who ran? Was it Warren Anderson? Yeah, the Warren CEO Anderson. who ran away? Yes, Warren Anderson. So instead of calling him what he was, a criminal, you say, Dekho, he is the grandson of these two adorable kids. They keep spending the whole night crying. Dadaji wapas aayenge ya arrest ho jayenge. Look at his wife. She is called the Mother Teresa of Detroit. She helps feed Black Lives Matter. So sad. Boo hoo hoo. Look at his son. He goes around, feeds orphans in Timbuktu and in the Arctic Circle. He specializes in giving baby food to seals whose mothers had been clubbed by horrible Norwegian seal hunters. You create nonsense like this, and you can see it is such a transparent and steady stream of complete and utter drivel that is going around in the press, and they think everybody is dumb. They think you just can't figure out ki ye kyon ho raha hai, kiske wajah se ho raha hai, and all of that. But they're starting all these sob stories. So the moment you see something, remember, human interest, the need to humanize someone. The math teacher syndrome? Fundamental syndrome. Yeah, it's the syndrome, exactly. It's the maths teacher syndrome. It's the Osama was a kya martyr tha? Kya bola usne? They killed a martyr in Abbottabad. Yeah. This kind of nonsense. Yeah. So, it's fine. It's fine. Son of a poor we see you. We see you for what you are. And we know the moment you write a story like that, we know you're basically, you've taken money from China.
which makes you what? Well, I mean, you figure that out. But yeah, so that's that. So two things that come out of this particular comment of yours. One is that you say that it is sending a message to the investors. Now we know, for one thing, that there are only two kinds of Chinese companies. One kind of a Chinese company is that which is directly state-owned, and the second kind of You're Chinese breaking company up. is... Sorry? Can you hear me? Can you hear me? I can't hear you. You're breaking. Check. Hello? Can you hear me? Yeah. Now it's much better. Yeah. So what I was saying is that there are only two kind of investors in China. The one is the state-owned Chinese company, which are directly owned by the state, and the second is those private companies which are owned by the officials of the CCP. I don't think there is any third kind of a company. And so if the investment is hit, and as you say that we tell the investors that you are now in hostile territory and you better behave yourself, then the party apparatchiks, as they are, they would find themselves cornered, and then they would probably try and corner Xi Jinping, the Shitler, as we call him. So, the Chinese economy is slightly more complex. What happens is when Deng Xiaoping took over, what his reforms were about was creating a genuine middle class. And that genuine middle class, once it gets one kind of empowerment, which is economic empowerment, remember, China was dirt poor. It was actually poorer than India when the People's Republic of China was proclaimed. And I mean, if you're going to lose 70 million people to famines and things like that, I mean, we don't need to go into how desperately poor that country was. So when Deng Xiaoping starts off the economic reforms, he creates a middle class. And this middle class discontent was what you saw in Tiananmen Square. These were people who were easily influenced by Western ideas. They thought they were ready for this blossoming of democracy and la-di-da, and then the massacre at Tiananmen Square happened. And what Deng Xiaoping realized was, you never give economic freedom to people without having a hold on them. Create dependency. Always, a lot of drug users think drugs set them free. Cocaine is I've never felt so free in my life. Kind of thing. So what happens is they give you this cocaine of wealth, but like a drug dealer, they maintain controls on you. And what are the controls out here? First, after Tiananmen Square, all demand was shifted to public sector demand, right? So the government acts as the intermediary. Even today, 70 to 80% of demand in China is public government demand. Private demand is quite low in China, which is quite unusual. Number one. Number two, what they did was, till 1989, it was a genuine market economy where, the individuals were getting empowered and things like that. It changed immediately. Of course, there was high levels of crony capitalism and so on and so forth. But it changed because what happens then is that one part of monopolizing demand by the state, you also need to monopolize supply by the state. So everybody had to be a party member. Only party members get contracts. Their children are watched and marked for good behavior and things like that. And what we saw was, when I studied in Australia and when I taught in Australia, all the kids, the Chinese kids who came to study there, they were the only ones that were given permits to come out, and they were ridiculously rich. I mean, we hadn't seen that kind of money. These kids would come on the first day. They wouldn't stay in the college hostel. They would, go, they'd rent out really posh apartments. They'd buy these 2-seater coupes and things like that, and drive around in fancy schmancy motorcycles and so on and so forth. So what happened was, we realized that everybody had to be in a guanchi. The guanchi is the kind of cliques within the Communist Party. So
Supply is also monopolized by Communist Party members. Demand is monopolized by the government. And this is how the whole system works. So it's a very controlled, it's not controlled the same way the USSR was, but it's controlled in a very, very different sense. But it's reached the peak of its viability. See, what happens with the industrial ages is the manufacturing revolution requires a strong state. It requires state control. But the information age, the state needs to take a back seat and the people then push the revolution forward. They can't, and this is why, countries like South Korea and Taiwan and Singapore sort of democratized in the 80s, 90s when the information revolution started off. What happens here is that they're simply not allowing that democratization. Instead of using technology as a tool to empower people, they're using technology as a tool to imprison people. And they are learning the limits of that kind of imprisonment, because what happens is, for China to say we are concerned about these apps being banned, for crying out loud, you don't allow Twitter in China, you don't allow Facebook in China, you don't allow Google in China. Okay, we could use Google Maps also in China. And amazingly, I could use Google Maps in North Korea. That is what is truly sensational. I can use it in North Korea, but I can't use it in China. Okay, to be fair, it was a downloaded map which was only being used for location placing and things like that. But in my entire train trip from Lhasa north into Xinjiang province and then east into Beijing, even the downloaded map wasn't moving. That is the extent of control. In spite of using VPN masking and all of that, it doesn't work. So, they're beginning to realize that when other countries start imposing reciprocal actions on you, it hurts. The problem with Xi Jinping is that he will never admit to it. He is much more about the concentration of power than he is about genuine growth of his people. In that sense, he's a lot like Brezhnev. People ask me if he's like Gorbachev. He is not like Gorbachev. Gorbachev was a naive idiot. This man is like Brezhnev. He's all about power, power, power. But Brezhnev was the man that destroyed the Soviet Union, not Mikhail Gorbachev. Yes. So Xi Jinping is going to be the man that destroys the People's Republic of China, but he'll hand the problem of the actual collapse, whatever. It might not be a collapse like the USSR, because, the level of homogenization has become too great. But what you will see is that whatever goes wrong will not happen in his term. It will happen in the terms of the president that succeed him in about 20, 30 years' time. If Xi Jinping lasts 20, 30 years, I think we can then with certainty say that China will collapse. Because as you say that in the information age, he's going to seriously lag behind. And you said Brezhnev. I've been to the Soviet Union in the Brezhnev era, and I've seen the kind of privations that people used to suffer and how they used to crave for such simple thing as we used to sail from Calcutta. We sailed from Calcutta to Odessa, which is now in Ukraine. And people used to crave for those 4 or 5 rupees, shiny, चमचमाते हुए वो लाइट मारते हुए जो वो चश्मे आते हैं, वो लाइट मारने वाले चश्मे 4 रुपए में हम कलकत्ता में खरीदते थे, और वहां पे लोग उसके 40-50 रूबल तक देने को तैयार थे. इतना डेस्परेशन था, इतनी हंगर थी. आइसक्रीम के लिए लाइन लगती थी, हफ्ते में 1 दिन आइसक्रीम मिलती थी, और वो लट्ठे वाला कपड़ा होता है जो आप बोलते हैं ना, बिल्कुल जो कोर्स कॉटन क्लॉथ, वो हफ्ते में 1 बार कहीं आता था, तो उसके लिए लाइन लगती थी लंबी. दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन विद माय ओन आईज. और बाहर यदि आप देखते हैं, हमारे यहाँ जो पिक्चर दिखाई जाती थी, वो तो वाह वाह क्या बात थी. सोवियत यूनियन तो स्वर्ग है इस धरती का, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता. और वो स्वर्ग जो है, अचानक पता चला कि स्वर्ग से सारी अप्सराएं कूद के नीचे आ गई. So I was in the Soviet Union in 84, 85, 86. हिंदी वालों के लिए भी थोड़ा सा बोलेंगे. हाँ, तो मैं USSR में था 84, 85, 1984, 1985, 1986 में. आप कहाँ थे? मैं भी और उधर क्या होता, हाँ, और उधर क्या होता था कि
जहां भी हम जाते थे, पहले तो लोग तुमसे मिलने आते थे, थोड़ा डर रहता था, पर क्योंकि तुम बोलते थे हिंदुस्तानियों से मिलना ठीक है। अगर आप अमेरिकन लोगों से बात करोगे, फिर केजीबी रात को आके ठक ठक करेगा आपके दरवाजे पे। तो ये भी चलता था। और हर एक चीज, क्योंकि उस समय मेरे पापा एक लंदन के पोस्टिंग से वापस आए थे, तो हमारे घर में अच्छी अच्छी चीजें होती थी। लोग आके ना एकदम घूर घूर के, उनका आंख इतना बड़ा हो जाता था, अरे वाह अरे वाह अरे वाह करके देखते रहते थे। पर मेरे को जब मैं बच्चा था, आई रियली लाइक्ड द यूएसएसआर, क्योंकि क्या था ना कि उन दिनों दिल्ली भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। उधर क्या होता था कि जो चीजें मिलती थी यूएसएसआर में, जैसे रास्ते थे, अच्छे अच्छे रास्ते थे, अच्छे ट्रेन थे एंड ऑल ऑफ दैट, it uh, it was a step up for me from Delhi, because Delhi was a lot like Pyongyang is today. So, Delhi in those days used to have a population of what, 4 million people. रास्ते में अगर 2 गाड़ियां दिख जाएं, हमारा बस होता था, हम भारती नगर में रहते थे, खान मार्केट के ऑपोजिट, और मैं डीपीएस मथुरा रोड जाता था, जो बस 7-8 मिनट का ड्राइव था उन दिनों में। और जब बाहर जाते थे, बस यूज्ड टू पिक अस अप एट 7 AM। अगर 7 बजे को एक गाड़ी आपको दिख जाए, लाइक वाओ, मैंने एक गाड़ी देख लिया करके होता था। सो कंपेयर टू दैट, मॉस्को वाज अ फार फार बेटर सिटी। वहाँ तो आप कह रहे हैं मॉस्को, ऑफ कोर्स आई वेंट टू ओडिशा, आई डिड नॉट गो टू मॉस्को। और लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऐसा था कि एक वो जो मैंने आपको वो 4 रुपए 5 रुपए वाले जो चश्मा बताया, हमारा कुछ कंफ्यूजन हो गया। आई वाज अ मरीनर, आई वाज द इंचार्ज ऑफ द बंकर्स ऑन द शिप। जो आपके पीओएल सप्लाई लेनी होती है, तो उसके लिए बार्जेज आती हैं शिप पे और उसको वो सप्लाई देती हैं। तो वो बार्ज का जो कैप्टन था, वो मेरे को कुछ इशारे कर रहा था, मेरे समझ भी नहीं आया वो क्या इशारे कर रहा है। बाद में ध्यान आया कि वो चश्मे मांग रहा था। तो वो जो भी उसने इशारा किया, मैंने कुछ इशारा किया, आई थिंक आई वाज नॉट वेरी गुड एट डम शराड्स और व्हाटएवर। तो वो कुछ समझ गया और उसने जो है एक्स्ट्रा ऑयल पंप करना शुरू कर दिया। और जो हमारी कैपेसिटी थी वो फुल हो गई और आई वाज क्लोज टू ओवरफ्लोइंग, एंड देन आई शाउटेड एंड समहाउ जेस्टिकुलेटेड, और किसी तरह से करके वो सप्लाई बंद कराया। और पता चला कि उसने कोई 25 टन एक्स्ट्रा डीजल ऑयल पंप इन कर दिया। उसके बदले में वो सिर्फ एक चश्मा चाहता था, वो भी मेरे पास नहीं था, वो गालियां देते हुए गया। Should we take some of the questions? I think we're getting lots of questions. We are getting a lot of questions that we'll do at the end. But we have to discuss some other part of the hybrid war. And first part is the military situation. So military situation. Military situation. First the land armies, and then we'll also discuss about the air force. इसके बाद फिर हम questions. So look, this is very evenly balanced. What you have is, you've got about 10 to 12,000 troops on their side with some heavy armor. We've got 10 to 12,000 troops on our side also with heavy armor, but uniquely also tanks. They're using more like infantry combat vehicles. We have tanks on our side. They have about 38 fighters deployed. We've got somewhere between 36 and 42 fighters deployed. We're not able to count them properly because they're obviously churning out a fairly high sortie rate. So it's it's fine. It's there's nothing to be worried about. The real scare that's coming up now is that people are saying ki bhai, it's going to be a 2-front attack. Pakistan is also mobilizing. They're putting up their troops. We're not seeing Pakistan mobilize on satellite imagery. Everybody was saying Chinese planes have landed at Skardu and they're opening up a second front. यार, हम 3 हफ्ते से स्कर्दू देखे जा रहे हैं, अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया है स्कर्दू के एयरबेस में, जो which is not normally there already. So I mean, where is this attack going to come from? Okay, maybe you can have things like they might open up a terror front, which is a Pakistan speciality, which they could do, which would be
the intelligence signature of it, the ability to detect it, is minimal, because these are basically people moving. They could just be normal people moving in buses, and you won't be able to pick it up because you can't see what's inside their bags through a satellite. So there are ways in which you can mostly detect things. In this particular case, there's nothing much that we're seeing happen, except an equivalent build-up on our side. What the Chinese are doing is they're aggressively building up durable structures on their side. So they're creating reality facts on the ground, as we call them, which we probably need to be doing a lot more. But it's still fine, because remember, our supply routes are much shorter. If you go to the place where the Galwan clash happened, the clash site is literally 5 kilometers away from the Shok River, which is about 1.5 to 2 kilometers wide, where you can easily land a helicopter to evacuate troops. To get a similarly wide spot where the clash happened at Galwan, the Chinese have to drive 34 kilometers as the crow flies, which is about 44 to 50 kilometers on the road. It's a very windy, curvy, narrow road, which would have taken them at least an hour, hour and a half to get through too. So, there are a lot of, you don't just go by how do the numbers stack up. If you remember when the Rwandans invaded Congo, on paper, the Congolese army was far superior in numbers. But the Rwandan soldiers were much better trained, had shorter supply lines and things like that, which is the same thing we're looking at here. You should also remember what's been happening with the Chinese army. Mostly because Xi Jinping has tried to eliminate the People's Liberation Army as a counterforce to the civilian president. What he's been doing is he's been shifting commanders left, right, and center. जैसे हम बाबू लोगों को, with all due respect to you, sir, not you, I'm referring to other babus. So जैसे वो agricultural department से लेके पब्लिक सैनिटेशन में डाल देते हैं और फिर फूड प्रोसेसिंग में डाल देते हैं, वैसे ज्यादा ये नहीं है. पब्लिक सैनिटेशन देखो तो इट्स वन एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, फूड प्रोसेसिंग इज द अदर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सो इट्स काइंड ऑफ कनेक्टेड, बट यू सी द टेक्निकलिटीज आर मच मोर, थोड़ा शौचालय जाना और खाना खाना में, प्रोसेस करना में काफी फर्क पड़ता है. पर फिर भी इसने क्या कर रखा है, ऐसे ही कर रहा है कि भाई एक दिन तुम आर्टिलरी में हो, फिर दूसरे दिन तुम टैंक्स करो, फिर तीसरे दिन तुम जाके इन्फेंट्री करो. ऐसे हिलाया जा रहा है लोगों को ताकि कोई भी पावर बेस बिल्ड नहीं कर सकता है चीनी आर्मी के अंदर, ताकि कोई इंटरनल कू अटेम्प्ट ना हो उसके खिलाफ. तो इस वजह से क्या हुआ है कि आप भी देख लो कि चाइनीज आर्मी कितना वीकन हुआ है. जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप इज क्रिटिकल इन एन आर्मी. अगर आपके लीडर्स इतने कंफ्यूज हैं कि यहाँ घुमाए फिराए जा रहे हैं, तो काम नहीं करने वाला ये चीज. दूसरा देख लो, इधर दो चीजें हैं, एक तो आर्मी लीडरशिप है, दूसरा एयरफोर्स लीडरशिप है. आप अपने आप से एक सवाल पूछ लो कि जब पाकिस्तान ने ये JF-17 थंडर खरीदा था, उन्होंने क्यों इंसिस्ट किया था कि भाई हम ये चीनी इंजन के साथ बिल्कुल नहीं लेंगे, इसमें रूसी इंजन ही लगेगा, नंबर 1, और दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा वो सब इटालियन इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा. क्यों? क्योंकि चीनी इंजन एकदम घटिया होते हैं. अभी भी उन्होंने सब जो 4-5 इंजन फैक्ट्री थे सब बंद करके एक फैक्ट्री में कंसोलिडेट करके रखा है. अभी तक भी वो एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड इंटरनेशनली कंपेटिटिव फाइटर इंजन नहीं ला पाए हैं. उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके. इसीलिए वो अभी भी रूस से सुखोइस खरीदते रहते हैं क्योंकि उनके सुखोइस भी उतने अच्छे नहीं है. वैसे सुखोई का इंजन काफी घटिया है. जो MiG-29 का इंजन है, जो JF-17 में भी जाता है, वो बेहतर इंजन है मेरे हिसाब से. बट दे स्टिल बाय द सुखोई, कि सुखोई का घटिया इंजन भी चीनी इंजन से बेहतर है करके. तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, शिफ्टिंग ऑफ द लीडरशिप प्रॉब्लम्स हैं, लीडरशिप का स्टेबिलिटी नहीं है, आपके वॉर प्लान्स तय नहीं है. तो काफी सारी चीजें हैं. क्या किए जा रहे हैं कि कोविड को इस्तेमाल करके थोड़ा एक्सपेंशनिज्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका क्या ये था कि भाई हम काफी अच्छी तरह से कैलिब्रेट करेंगे. जैसे कि आप
हिंदुस्तान में काफी कॉमन प्रॉब्लम होता है कि लैंड ग्रैबिंग। ठीक है, तो आप जाके, आपका फार्म है 1 एकड़ का, पास में जो पम्मी आंटी और हरदीप अंकल हैं उनके फार्म कोई देख रहा नहीं है, बस कोई है, तो जो बार्ब्ड वायर का फेंस है ना, आप जाके बस 1-2 मीटर अंदर लगा दो पूरा। जब 2 हफ्ते के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने वर्कर से बोलो कि भाई चलो चलो 1 मीटर और अंदर घुसेटो। ठीक है, तो अंदर घुसेटते हैं। पम्मी आंटी जब आती हैं फार्म को देखने, महीने में एक बार बोलती हैं, अरे ये थोड़ा पास लग रहा है यार। हाँ नहीं, सही है सही है, फिर चले जाते हैं। फिर 2 मीटर और आप अंदर घुसेटते हो, और एंड में क्या करते हो, पूरा पम्मी आंटी का लैंड आप कब्जा कर लेते हो। ये तो हिंदुस्तान में रोज होने वाली बात है। चाइनीज क्या कर रहे थे कि वो समझ रहे थे कि वो थोड़ा थोड़ा घुसेटते रहेंगे, घुसेटते रहेंगे, घुसेटते रहेंगे, और कोई कुछ नहीं करेगा। वो जोर से चांटा मिला है, यानी कि पम्मी आंटी और हरदीप अंकल ने आके जोर से तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है कि उतारो, नहीं तो फिर पुलिस बुलाने वाले। तो यही हुआ है इधर। वो क्या सोच रहे थे कि पम्मी आंटी और हरदीप अंकल मारेंगे, नहीं, वो नहीं हुआ। 40 साल में पहली बार लोग मरे हैं, और मरते मरते मार के ही मरे हैं। ये आप कभी भी भूलिएगा मत। जो भी हमने सैटेलाइट इंटेल देखा है, उसके तहत उनका लॉस हमारे से काफी ज्यादा भारी पड़ा है। ठीक है ना, तो हौसला भी रखिए। कोई हम, वी आर नॉट कोलैप्सिंग, दिस इजंट गोइंग टू बी अनदर रीमेक ऑफ 1962 entirely. If it prolongs, it might be, क्योंकि industrial strength काफी ज्यादा है, but it's not going to be a repeat of 1962. मैं इसमें से दूसरी चीज कह रहा था, बल्कि क्योंकि आई डोंट नो वेदर यू सॉ दिस, मैंने 1-2 वीडियो भी एयरफोर्स पे किए थे। आप शिव शास्त्री को जानते होंगे, ही इज एन मैच्योर military aircraft aviation enthusiast and been looking at the military aviation aircraft for almost 3 decades. उनके साथ मैंने एक वीडियो किया था, और उन्होंने एक पूरा डिटेलिंग करके और बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकाला था। और उनका कंक्लूजन ये था कि इस थिएटर में, यानी लद्दाख तिब्बत शिंकियांग थिएटर में, चाइनीज एयरफोर्स इज नो मैच टू इंडियन एयरफोर्स, फॉर द सिंपल रीजन, जो 2-3 मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। पहला तो ये था कि जो 7 एयरबेस हैं जिनसे ये थ्रो कर सकते हैं अपने एयरक्राफ्ट, उसमें वो J-20 का कोई ऑप्शन है नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उनका है नहीं। अगर J-20 उड़ेगा तो उसको चेंगडू से ही उड़ना पड़ेगा, तो वो चेंगडू से उसकी वैसे तो रेंज में नहीं है, वो रीफिलर वगैरह लगा के वो लाएंगे। बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, as you yourself said, they are all junk pieces basically, and not a comparison to either Su-30 or the Mirages, or even other the kind of things that India can throw. Plus the terrain, the Ningchi, Lhasa, Shigatse, and Nagari. These 4 air bases are all at an elevation of 4,000 meters or more. And that of course restricts the aircraft performance, और एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस अफेक्ट होने की वजह से उनका जो वेपन लोडिंग है और उनकी जो फ्यूल लोडिंग है, दोनों अफेक्ट होती हैं, और उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते। एटलीस्ट ऑप्टिमम क्या है, दैट परफॉर्मेंस इज रिड्यूस्ड बाय अबाउट 50%। तो इफेक्टिवली जो 3 अच्छे एयर बेसेस हैं, तीनों शिंकियांग में है उनके। तो इस तरह की सिचुएशन में, और जबकि इंडिया की जो मैंने एक पूरी एनालिसिस की थी कि 15 एयर बेसेस ऐसे हैं, उसमें से एक ले हटा दीजिए जो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, बाकी सारे के सारे प्लेन्स में, या 2 श्रीनगर अवंतीपुरा जो है वो करीब 1500 से 2000 मीटर की एलिवेशन पे। इस तरह की सिचुएशन में जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ इस थिएटर में इंडियन एयरफोर्स की है, वो चाइनीज एयरफोर्स से डबल हो जाती है। तो ये सिचुएशन कैसे प्ले करेगी, that is something that we have to look at. I think right now I think we lost Abhijit on the screen. We're just trying to get him back, or generator has failed, so what to do?
Just a minute. I'm trying to get Abhijit back on the line. His electricity supply has failed on his end. So please bear with us. So let me continue the discussion that what I was doing till the time that we get Abhijit back online. Is that the Air Force, जैसा अभिजीत ने भी आपको बताया कि जो एयरफोर्स का जो इंजन जो यूज कर रहे हैं इतना घटिया है कि पाकिस्तान तक ने चाइनीज इंजन इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो ये जो चाइना ने एक हवा बना रखा है कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, हमारे पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो हम यहाँ थ्रो कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट में अभिजीत को ये जो भी चाइनीज थ्रो कर सकते हैं वो हमारे फाइटर्स के मुकाबले बहुत कमजोर साबित होंगे। इसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, और एक वीडियो हमने शिव शास्त्री जी के साथ किया था अभी 2 दिन पहले, और उसमें ये पूरा एयरफोर्स में किस तरह से एयर वॉर में चाइना इस थिएटर में कहीं नहीं ठहरता है हिंदुस्तान के मुकाबले, वो बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। While waiting for Abhijit, what I can do is that I can start taking some of the questions. I'm just trying to call him. Let us see whether he picks up. Oh, booting up. Okay. So good news. This laptop is booting up again. So I will. What I'll do in the meantime is that request you कि आप और क्वेश्चंस लाएं, और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हम कोई ठीक ठाक बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम किसी भी तरह का कोई वीडियो पुट आउट करते हैं, कोई प्रीमियर करते हैं, कोई लाइव करते हैं या कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी डालते हैं, तो वो सारे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और उस तरह से आप हमसे जुड़े रह सकेंगे। मैं आपको ये अच्छी खबर भी देना चाहता हूँ कि लोगों ने जयपुर डायलॉग्स के इन डायलॉग्स को बहुत पसंद किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अगला इवेंट होने वाला है जयपुर डायलॉग्स का, वैसे तो हम फिजिकल इवेंट करते रहे हैं 2016, 17, 18, 19, ये 4 हमारे हो चुके हैं, लेकिन जो 5वां जो 5th जयपुर डायलॉग इवेंट है वो हमें डिजिटल ही करना पड़ेगा। और ये जो हम लगातार आपके साथ संवाद कर रहे हैं, जो लगातार हम वीडियो दे रहे हैं, जो लगातार बातचीत चल रही है लोगों से, आपसे, वो उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम एक सार्थक एनुअल इवेंट डिजिटली कर पाए, और यदि आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। तो बात हो रही थी चाइनीज एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स की, और चाइना का जो बेस्ट प्लेन है वो है J-20। ये J-20 चाइना कहता है कि ये हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो ये इसका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो कैसा होता है? 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसको कहते हैं जिसमें स्टेल्थ फीचर्स होते हैं। स्टेल्थ फीचर्स का मतलब ये होता है कि उसमें इस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है और उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है इस तरह से कम किया जाता है डिजाइन के तरीके से कि रेडार उसको पिकअप नहीं कर पाए। तो जो आपके अर्थ बेस्ड रेडार्स हैं वो भी उनको पिकअप नहीं कर पाए, और जो एयरक्राफ्ट के रेडार्स हैं और जो आपके एवॉक्स वगैरह के जो रेडार्स हैं वो उनको पिकअप नहीं कर पाए। तो जो भी चाइना की क्लेम है वो, मैं फिर से आपको कह दूं, वो चाइना की क्लेम है। वेलकम वंस अगेन अभिजीत जी, आपका स्वागत है। आपके एब्सेंस में हमने इनको थोड़ा सा एयरफोर्स पर ज्ञान देने की कोशिश की थी। अब मैं आपसे वही सवाल पूछ सकता हूँ जी। आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी जी। तो जब आपका कनेक्शन स्नैप हुआ उस समय हम बात ये कर रहे थे कि जो चाइना की जो एयरफोर्स है इस थिएटर में, उसके पास 4 एयर बेसेस तिब्बत में है,
चारों के चारों 4000 मीटर से ऊंचे हैं, जिसकी वजह से उनकी वेपन लोडिंग कैपेसिटी उनके एयरक्राफ्ट की और उनकी फ्यूल टेकिंग कैपेसिटी दोनों लिमिट हो जाती हैं और इफेक्टिवनेस उनकी 40 से 50% घट जाती है। सिर्फ 3 बेसेस जो उनके, उससे 3 बेसेस उनके जो शिंकियांग में है, काशगर, यारकंद और होतान, वो 3 बेसेस ऐसे हैं जो वो मीडियम ऑल्टीट्यूड्स के हैं और उसके अगेंस्ट में, और उनमें जो कैपेसिटीज है उनकी एयर बेसिस की, जो जहां वो जितने रख सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेट किया हमने, मैंने और शिव शास्त्री जी ने मिलकर ये कैलकुलेट किया था कि जो मैक्सिमम जो थ्रो कर सकते हैं जीरो रिडंडेंसी के साथ में, वो है 162, लेकिन जीरो रिडंडेंसी कभी होती नहीं है, आपको भी पता है। तो 130 is about the optimum they can throw up, or effectively 130 because of their constraints, especially the altitude constraint, support staff constraint. सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट जो है, जो जिसका हमको ज्ञान नहीं हो रहा, वो ये है कि उनका सपोर्ट स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ बहुत ही लिमिटेड है और लगातार उनको रोटेट करते रहना पड़ता है। ये जो लिटिल एम्परर सिंड्रोम है, इसकी वजह से जो चाइनीज फोर्सेस की सपोर्ट स्टाफ की जो फाइटिंग कैपेसिटी है और जो कमिटमेंट कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो गई है। उसके कंपैरिजन में जो इंडिया के बेसेस हैं, उसी रीजन में जो 500 से 600 किलोमीटर के रेडियस में है और जो पूरा आप लद्दाख कवर कर सकते हैं, वो है 15, जिसमें से एक लेह जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड है और श्रीनगर, अवंतीपुरा, ये जो 2 हैं वो मीडियम ऑल्टीट्यूड है। उसके अलावा 12 बेसेस सारे के सारे प्लेन्स में लोकेटेड है। अंबाला रफाल होस्ट करने जा रहा है और बाकी भी आपके ये जो सुखोई और मिग बाइसन, ये सारे के सारे हर तरह की पूरा कॉम्बिनेशन वहां पे, और सिर्फ इन 15 बेसेस से 270 ऑपरेट हो सकते हैं एक साथ। इसके अलावा मैं और काउंट नहीं कर रहा कि बाहर जो पेरिफेरी में है, गोरखपुर है, लखनऊ है, ग्वालियर है, बमरौली है, इलाहाबाद वाला, इतने सारे बेसेस हैं जो सब चाइना का इंतजार कर रहे हैं कि चाइना कुछ करे और वो तैयार हो। ये 1962 तो है नहीं, जहां हमारी एयरक्राफ्ट इतनी सुपीरियर, एयरफोर्स इतनी सुपीरियर होते हुए भी, इवन ऑन पेपर इंडियन एयरफोर्स वाज मच सुपीरियर इन 1962, उसके बाद भी उसको इन्होंने इजाजत नहीं दी चलने की। तो ये जो एयरफोर्स वाली इक्वेशन है, उसको आप कैसे प्ले आउट होते हुए देखते हैं? देखिए, मेरा वरी क्या है, 2 चीजें हैं। पहले 1962 की तरह ये समझेंगे कि एयरफोर्स यूज करना एस्केलेटरी है, इसलिए एयरफोर्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इवन दो वी हैव ट्रेडिशनली एंजॉयड एन एयर एडवांटेज। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें, उनके जो पुराने विमान भी हैं ना, वो लो मेंटेनेंस विमान है। तो जो सोवियत मेंटेनेंस फिलॉसफी है, उसके तहत वो बस फेंके जा सकते हैं। मेरा इश्यू क्या है कि उनके पास इतने सारे विमान हैं फेंकने के लिए कि इवन द प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ 10,000 फुट हाई एयरबेस, they can keep generating very very high sortie rates। उसमें मेरे को डर लगता है। दूसरा चीज क्या है कि हम सुखोई पे सुखोई मैच किए जा रहे हैं। उनके सुखोई तो पूरे रूसी बिल्ट है, हमारे सुखोई में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम पूरा इंटीग्रेट नहीं कर पाए इजरायली जैमर विद रशियन रेडार विद फ्रेंच एवियोनिक्स और ये सब। तो स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। उनके वीकनेसेस जैसे आपने बताए काफी सारे हैं, पर उनके स्ट्रेंथ्स भी हैं, इसको भी याद रखना है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा सुखोई है, विच इज द बैकबोन ऑफ आवर फ्लीट, क्या 270 के ऊपर मिराज प्रॉब्लम नहीं, 29 के साथ होते रहेगा, and that is never a good thing। Mostly optimistic। कम से कम एक चीज आप देख लो, इसका डेटर सोचेंगे 100 बार बिफोर कुछ हमला करें करके।
वैसे आई एम एंटिसिपेटिंग सम काइंड ऑफ अटैक टू हैपन, क्योंकि उनको स्कोर सेटल करना है। जो उनके लोग बंदे मरे थे 15 अगस्त को, वो जरूर उसको एक किस्म से सेटल करना चाहते हैं। हम काफी समय के लिए समझते थे कि इंडिया विल अगला अग्रेशन का टारगेट नहीं होगा, वियतनाम अग्रेशन टारगेट का अग्रेशन होगा, क्योंकि वियतनाम तो उनको बुरी तरह से मार मार के पीटा था ना 1979 में। तो वो रिकॉर्ड उनको करना है। 15 हुआ है कि जून हमारे हाथ 15 जून की बात कर रहे हैं। हाँ 15 जून, हाँ 15 अगस्त तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, सॉरी, हाँ 15 जून। बट व्हाट हैपेंस हियर इज, इस बार उनको इतना पिटी खाए हैं वो, दे विल बी लुकिंग, क्योंकि आप एक मोराल के दृष्टिकोण से अगर देखें, troops get very badly demoralized unless you avenge defeats like this. So इनके इधर काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं कि एयर वॉर में तो कम से कम वी विल मैच देम फेयरली वेल। हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे वीकनेसेस हैं, उनके वीकनेसेस हैं, पर काफी अच्छा मैच रहता है। अगर ये प्रॉब्लम क्या होगा ना कि कितना देर अगर युद्ध तो फुल स्केल वॉर तो नहीं होगा, पर जो भी लिमिटेड स्कर्मिशेस होंगे वो कितने देर तक चलते रहेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा देर चलेंगे, उनका इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की वजह से उनका एम्यूनिशन स्टोर जो है इट विल बी मच बेटर सप्लाइड एंड दे विल हैव मच ग्रेटर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। ये कहीं ना इसकी तरह ना हो जाए, अमेरिकन सिविल वॉर की तरह ना हो जाए। साउथ का सब ब्रेनी टैक्टिक्स था, अर्ली विक्ट्री सब साउथ के हो रहे थे, पर नॉर्थ का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ था वो एग्रीकल्चरल साउथ मैच ही नहीं कर पाया। तो ये होने का भी काफी चांस है। वर्ल्ड वॉर 2 भी अब अगर आप देख लो, अल्टीमेटली व्हाट टिप्ड इट वाज कि जापान और जर्मनी का इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ उतना था ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका और रशिया सब मिला के। तो अल्टीमेटली कोलैप्स तो होना ही था। अगर अच्छे जनरल्स थे ना अच्छे थे नो प्रॉब्लम, कोलैप्स तो अल्टीमेटली होना ही था उनका। सो ये तो एडमिरल, आपको याद है ना, एडमिरल यामामोटो ने बोला भी था कि अगर आप पर्ल हार्बर करेंगे, मैं 6 महीने के लिए आपको विक्ट्री गारंटी कर सकता हूं, उसके बाद तो हम हार ही जाएंगे। इट्स लाइक दैट। So there is a requirement for a lot of calibration from the Indian side also. मैं ये और आपसे पूछना चाहता हूँ कि do you actually see the USA getting into the mix? I don't think so. I don't think so because we haven't called on them to get into the mix. I don't think they are in a mood to get into the mix क्योंकि we are not willing to commit to a deeper military relationship. आपको याद है ना 62 में क्या हुआ था? उस रात जब बहुत ही भारी हमला हुआ था, नेहरू ने जल्दी से एक लेटर लिखा, जो भी चाहिए तुमको हम कर देंगे। फिर उसके 6 घंटे बाद एक दूसरा लेटर लिखा, चल भाई इतना भी नहीं, हमको ये सब दे दे, पर हम तेरे साथ तेरे बैंड वैगन में नहीं चलेंगे, ठीक है ना। अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि देयर इज दिस रिफ्यूजल टू नेम चाइना एज द एनिमी। यार एक देश ने आके तुम्हारे 20 लोगों को मारा है, उसको दुश्मन कहने में आपको इतना संकोच क्यों हो रहा है? 15 जून को जब ये हुआ था रात को, 17 जून को हिंदू एक एडिटोरियल चलाता है जो आपके फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे MK नारायण, वो लिखते हैं नॉन अलाइनमेंट बहुत अच्छा पॉलिसी है, करते रहना चाहिए, हमारे कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर देखिए, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना उल्लू की तरह, ना ही तो दाएं ना ही तो बाएं, पूरा 180 डिग्रीज आपका सर घूमते, 360 डिग्री सर घूमता है आपका, तो यही होते रहेगा आपको। प्रॉब्लम क्या है ना, ये समझते हैं कि हमारे इधर तो उल्लू हम उसको बेवकूफ मानते हैं। वेस्ट में उल्लू विद्या का रूप होता है ना, अथीना का हाथ में, अथीना बोथ गॉडेस ऑफ विक्ट्री थी, दुर्गा की तरह गॉडेस ऑफ विक्ट्री भी थी, पर सरस्वती की तरह विद्या देवी भी थी। तो दुर्गा के रूप में वो ढाल पकड़ती थी एक हाथ में, और विद्या के रूप में उल्लू पकड़ती थी। तो वेस्ट में उल्लू को बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है, हमारे कल्चर में उल्लू को उल्लू ही माना जाता है, यानी कि काफी डम। तो इधर प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम अपने आप को
बहुत ही होशियार समझते हैं, पर हम ज्यादातर हिंदुस्तानी उल्लू निकलते हैं, वेस्टर्न उल्लू नहीं निकालते। तो ठीक है, उन्होंने हमारे को उल्लू बना के रखा है, बट आई एम टेलिंग यू, विद दिस एटीट्यूड वी आर नॉट गोइंग टू गेट टू मेनी फ्रेंड्स, and nobody is really willing to stand up for us. They may supply us, but they were not going to stand up for us. At the very best outlier, अगर युद्ध छिड़ गया, अमेरिका माइट सेंड कि जैसे हमारे खिलाफ बांग्लादेश में किया था ना, वो 6th फ्लीट या 7th फ्लीट या कुछ भी जो भेजा था बे ऑफ बंगाल के अंदर, 7th फ्लीट भेजा था बे ऑफ बंगाल के अंदर, हमको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, हमारे ऑफेंसिव को थोड़ा स्लो करने के लिए। शायद वो करेंगे, पर उससे ज्यादा उनका करने का कोई ये नहीं है, क्योंकि हम भी उनको कुछ देना नहीं चाहते। जो है yes, that is right, but also the fact stands that China is saber rattling more against Taiwan and more in South China Sea than it is doing against us. So it may just be that we may be asked to join them rather than we asking them to join us. Now we'll take the questions, Abhijit, and what we'll do is, because a lot of questions have come और वो ऊपर चले गए हैं, तो दी जयपुर डायलॉग्स के नाम से आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है ये मधुर्य शर्मा का कि रफाल वर्सेस J20 हु विंस? रफाल एनी डे एवरी डे, डे आफ्टर डे। इसमें ना आप J20 का जो शेप है उससे ये मत कीजिएगा कि स्टेल्थ है इसीलिए J20 जीत जाएगा करके, नहीं। उसके स्टेल्थ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। उसका इंजन ब्लीड का प्रॉब्लम है, उसके टारगेटिंग का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला था ना आपको, अभी भी पाकिस्तानी क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि इटालियन रेडार ही डालेंगे, इटालियन इलेक्ट्रॉनिक्स ही डालेंगे, रूसी इंजन ही डालेंगे। जो चाइनीज आप देख रहे हैं, ये इस पे मत जाइए कि उनके फोन्स अच्छे हैं, कि OnePlus 6 और ये क्या ये आजकल OnePlus 6 इज एज गुड, पता नहीं अब OnePlus 8 हो गया होगा, पता नहीं। IPR चुरा के बनाए हुए हैं, तो ठीक है। is as good as Apple. Don't go by that, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिप्लेसमेंट रेट काफी जल्दी होता है। 6 महीने में कोई नया फोन ले आया जाता है, क्योंकि किटी पार्टी आंटियां और पोकर नाइट वाले अंकल्स, they want to keep changing their phone and getting a new phone every 6 months. That is not how military advances work. In military advances, the Chinese are nowhere near. आप इसमें अब आप अमेरिका जाएंगे और उनसे प्राइवेट में बात करेंगे तो बहुत अलग से कहानी आपको सुनाई पड़ेगा कि भाई ये चाइनीज कर क्या रहे हैं, हाउ आर दे प्रोड्यूसिंग सच आउटडेटेड जंक। पब्लिक में क्या बोलते हैं, अरे यार ये चाइनीज वेपन्स दे आर सो डेंजरस, दे आर द नेक्स्ट बिग थ्रेट। क्यों? क्योंकि उनके कांग्रेस से फंडिंग चाहिए। अगर आप बोलेंगे जाके कांग्रेस बोलेंगे कि भाई यार ये पता नहीं क्या क्या ये कचरा वेपन्स तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस बोलेगा अच्छा $600 बिलियन, नो चांस, तेरे को बस $50 बिलियन में काम चलाओ। तो अमेरिकन मिलिट्री जाएगा कहाँ? So see, there is, you have to make a difference between private conversations you have with the Americans and public conversations that are done for budgeting reasons. Rafale is any stealth or no stealth, it is a far superior plane. Yes. Hi Abhijit, actually, how much China is prepared? Rafale also has some stealth feature. Rafale has stealth features, but they don't over dramatize and over publicize it. Whereas they are passive. Passive. And J20, whatever little they have, they over publicize it. So that's the thing. The next question, Saugata Chatterjee, how much China is prepared for electromagnetic warfare, and what is India doing to counter it? Well, I don't know what you mean by electromagnetic warfare. I see it as a two-part question. One is electromagnetic kinetic, like EMP, in which case you have to detonate a nuclear device in near Earth orbit, और उसके electromagnetic waves आके सब कुछ तबाह कर देते हैं। वो तो होने वाला नहीं है. That is an escalation to nuclear war, ठीक है ना? But in the electromagnetic spectrum, like electronic warfare and things like that, चाइना का भी कोई लीड नहीं है, हिंदुस्तान का भी कोई लीड नहीं है, क्योंकि we have never really understood or implemented electronic warfare properly.
एंड चाइना में अगर आप देखेंगे जो भी उनके सक्सेस हुए हैं, काफी लोग बोलते हैं कि भाई देखो वो जो लेबनान का कैंपेन हो रहा था 2006 में, एक चाइनीज CSS 602 एंटी शिप मिसाइल ने कैसे एक इजरायली स्टेल्थ फ्रिगेट पे हमला कर दिया था. इट हिट इट एंड किल्ड अ फ्यू सेलर्स. अब देखिए उस इजरायली फ्रिगेट में क्या था, इजरायली कॉर्वेट में क्या था, स्टेल्थ तो था ही, पर उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम ऑन ही नहीं रखे थे क्योंकि वो जानते नहीं थे कि हिजबुल्लाह के पास ये मिसाइल्स हैं और लेबनान के पास तो कोई एंटी शिप मिसाइल थे नहीं. तो दैट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज अटैक. ठीक है. आई know for a fact that some of the DRDO's electronic warfare equipment works fine. It could be a lot better, but remember, Chinese electronic warfare is no big shakes. Electronic warfare जो ऐसे चीज है जो कोई भी देश एक दूसरे देश को देता नहीं है. रूस भी हमारे को इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं देता है. चीन को तो आप भूल ही भूल जाओ. चीन को तो बिल्कुल ही नहीं देने वाले हैं. और चीन लेगा कहां से, किससे लेगा, ये आप बता दो मेरे को. तो ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज वन ऑफ द स्पेक्ट्रम्स आई एम लीस्ट वरीड अबाउट. अगर आप देखोगे कि रूस भी कितना बैकवर्ड है इसमें, सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा. जब ये गल्फ वॉर नंबर 1 ब्रेकआउट हुआ था, नंबर 2 सॉरी 2003 में, क्या बोला गया था कि रशिया हैज सोल्ड इराक GPS जैमर्स ताकि GPS गाइडेड बॉम्ब ठीक से टारगेट नहीं कर पाएंगे. What it turned out was GPS jammers सिविलियन GPS पे काम करते हैं, मिलिट्री GPS पे कोई भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि मिलिट्री GPS इतना तगड़ा होता है कि अगर एक पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं ना, जब वाटर में डाइल्यूशन करना पड़ता है, जब आप ये करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये पार्ट्स पर मिलियन होता है. सो हर 10 मिलियन सिग्नल्स अगर जैमिंग के हो, ये 10 मिलियन माने 1 करोड़ जैमिंग के सिग्नल्स हो और बस एक पार्ट असली सिग्नल आ रहा है आपको GPS से, एक मिलिट्री GPS उसको भी रिसीव कर पाएगा. और रूसी ये जानते भी नहीं थे. पर जब सीरिया में 2013 में जब वो गए अंदर, कब गए थे रशिया, 2015 या 2016? When did Russia enter Syria? I forget now. Sorry, it's not at the top of my head. But when the Israelis were telling us that, you know, it was a surprise. They'd become very, very good at electronic warfare, but it was nothing that we could not overcome in about 3 to 4 days. So that shock and surprise of the Russian improvement in electronic warfare, as per Israeli analysis, would have lasted only for 2 to 3 days. 2 to 3 days had this been a Russia-Israel war. Russia ने 2-3 दिन के लिए काफी सारे इजरायली फाइटर्स मार के गिराए होंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया होगा. ठीक है. तो I don't see them having any great advantage in the electromagnetic spectrum. एक क्वेश्चन था ऊपर आया था फिर चला गया. हाँ, अनिरुद्ध, in the last slide Shiv Shastri conclusion was that we have an edge in air war. No, I didn't say that, Anirudh. I said it is a complex situation. Never overestimate yourself, never underestimate the enemy. We have positives and negatives, they have positives and negatives. That is all. Okay. So each person's assessment of the positives and negatives can be different. You can't expect everybody to agree on the same thing. Next question. Okay. What are offensive options India has to cripple CPC except military option? Will it help free Chinese people and is it in India's interests? Okay. Can you keep the question on the screen because... Yeah. Offensive options to cripple CPC except military, zero. Kuch nahi hai as far as I can see. We have Sitaram Yechuri. हाँ, सीताराम येचुरी को भेज दो उधर. वो 24/7 हिंदुस्तान को डुबाने की कोशिश करता है. उधर जाएगा तो चीन एक दिन में डूब जाएगा. आपको याद है वो लालू प्रसाद यादव ने जो किया था ना, जब वो टोक्यो गए थे, वो सब जापानीज कंपनीज थे और उन्होंने बोला सर आप हमारे को पटना बस एक दिन दे दो, 1 साल दे दो, हम उसको टोक्यो की तरह बना देंगे.
तो लालू ने बिल्कुल इमीडिएटली उनको तुरंत रिप्लाई दिया कि भाई तुम मेरे को टोक्यो एक दिन के लिए दे दो, एक दिन में उसको पटना बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसकी तरह है। Will it help free the Chinese people and is it in India's interests? Well, look, there's no way we can take on China direct like that. It's a fool's errand. This is, they're 13 times bigger than us. Don't even get into that. We shouldn't even look. अपनी औकात में रहनी चाहिए, ये हमारे औकात से बहुत ज्यादा है. And freeing China, no idea. We shouldn't free China at all. We should do to China what America did to the USSR. Which is we हमारी औकात नहीं है. America will have to do to China what America did to the USSR. हमको पीछे रह के भड़काना चाहिए. वो मंत्रा जैसे इसको भड़काती थी ना रामायण में, और जैसे वो शकुनी मामा इसको भड़काते थे, दुर्योधन को भड़काते थे. हमारा रोल है मंत्रा बनना और शकुनी बनना, ठीक है. हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ब्ला 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 कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना. ये सब ये डिल्यूजन्स प्लीज आप भूल जाओ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी लिमिटेड स्केल वॉर. गॉड फॉरबिड द चाइनीज एवर इम्पोज फुल स्केल वॉर ऑन अस. It will be heroic, that's fine, but we'll be like Poland in 1939. Okay, so don't even go there. Chetan Sharma, can you suggest ways for Indian app creators a way to monetize their apps rather than loading their product with? Can you suggest ways for Indian? I don't know what you're asking me about, Chetan, because I don't know the dynamics of how this works. So sorry. Next question. Tarush, some people say that war with China can boost our economy by creating demand, as it did in the time of World War II. Also, can Chinese damage our IT and digital infrastructure? Yes, the Chinese can damage your IT and digital infrastructure. They have in the past. They've compromised our MEA computers on 2 separate occasions, the same way, and we did absolutely nothing about it. We still don't have the counter cyber warfare capability. And what can we do to them? Again, we've got very limited offensive capabilities. So zyada kuch ho nahi sakta. Rajat Talak, can the PLA keep their forward positions in Ladakh come the winter? Very interesting question. I believe they can, and I'll tell you why. Their road networks are very good, number one. And I have been, because when Doklam was happening, I have been to Tibet. I have driven around a lot of these places. I haven't come as far west as Ungari, but I went to Shigatse and places like that. And what I saw was, हमारे दृष्टिकोण से जो एक impossible to supply, not worth building a road जगह होगा, उधर भी बहुत आसानी से access करने वाला इन्होंने road बना दिया है, ठीक है ना. तो सप्लाई तो हो सकता है. दूसरा, उनका जो ड्यूरेबल टेंट जो मैंने देखा है 3 या 4 साल पहले टिबेट में, वो काफी अच्छे क्वालिटी का है. उसमें बर्फ जमता नहीं है ज्यादा और गिर जाता है. और आपको याद रखना चाहिए कि उधर बर्फ डिपेंडिंग ऑन द एरिया गिरता ज्यादा नहीं है. ठंडा बहुत हो जाता है पर गिरता नहीं है, ठीक है ना. और उनका, मैं शिगात्से में एक बहुत ही घटिया होटल में रह चुका हूँ, जहां पे शौचालय जाने के लिए बस गड्ढा था, और -10 का टेम्परेचर था उस समय समर में. बट ये करके वो मैनेज कर लेंगे. तो आप वेस्टर्न स्टैंडर्ड पे मत जाओ. दे विल मैनेज फाइन. दिस इजंट लाइक द पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी अप इन द हाइट्स इन कारगिल. Rakesh Sharma, are government providing loans for countering Chinese economy? No, they're not. Absolutely not. We have an anti-business environment. Our environment here is not pro-business. तो हम बात कर सकते हैं कि चाइनीज को निकालो, बट वी आर नॉट इन अ पोजीशन. ये मेक इन इंडिया, तो लास्ट टाइम आपने मेक इन इंडिया का शेयर कहाँ देखा था? आजकल वो शेयर दिखाई देता है? वो शेयर तो बिल्ली बन के कहीं भाग गया है. तो कुछ नहीं. India's common man, the phoenix rises again. Oh, that's not the question. Okay. Pakistan, that's the name of the person. That's the name. It's a longish name. A very long name, yeah. This is like some, I don't know, some comic character name. Acha. Pakistan is gathering army in Gilgit. No, it is not. It really is not. And how long will a forefront and 2 countries, a forefront and 2 countries against one last? This is such a hypothetical question. It's not happening. It's not happening.
Devesh Pant, what about laser and other modern weapons? Laser hasn't been weaponized yet. As best a laser can do is shoot, it can disable infrared and it can barely shoot down a drone. It hasn't reached the level of weaponization yet. Okay, Ajesh Philip, given their limitations in J&K, do we have to be more careful about Chinese army in Arunachal Pradesh? Yes, we do. Never ever take the Chinese for granted. Never do that. Never, never, never do that. The Chinese are dangerous. They were dangerous. They will continue to be dangerous. And just, to use that Hogwarts saying, constant vigilance. Constant vigilance. You've wasted 20 years trying to not build an alliance with America. Now do it, because that is your only option left right now. ठीक है, तुम्हारी औकात नहीं है उनको take them on direct, except in a short limited war. Jayant Mishra, AMCA status, when do you think it will be available? भाई, not in my lifetime. ठीक है, जब मैं बच्चा था 1980 में LCA शुरू हुआ था. अब मैं मोटा गंजा उन दिनों में काफी अच्छा भी लगता था. अब मैं मोटा गंजा अगली लगता हूँ. 42 इयर्स हो गए हैं, अभी तक मैंने LCA नहीं देखा है भाई. तो AMCA तो अभी शुरू हो रहा है ना. अभी जब मैं 80 साल का हूँगा और मेरे दांत सब निकल गए होंगे, मेरा पता नहीं क्या, मेरा पैर कोई नी रिप्लेसमेंट हो गया होगा, मेरा कान नहीं चल रहा होगा, मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, पता नहीं क्या क्या, ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी हुआ होगा, तभी AMCA आएगा. मेरे लाइफ टाइम में नहीं आने वाला है, शायद तुम्हारे लाइफ टाइम में भी नहीं आने वाला है. तुमको जाके ठंग ठंग भजन करना है. ये ना, जब क्या घोरी या गजनी ने आके वो सोमनाथ को डिस्ट्रॉय किया था ना, सब 30,000 लोग अंदर घुस के ठंग ठंग कर रहे थे कि भाई आके बचा लो हमको. ये उसी की तरह आप जाके अंदर जाके ठंग ठंग करो. AMCA मेरे लाइफ टाइम में नहीं होने वाला है. ठीक है ना. हाई डू वी हैव रेडिएशन. तेजस को LCA नहीं मानते क्या? LCA नहीं आया है. इट इज अ हाईली डिग्रेडेड failed version which is being forced to just for the sake of forcing it through. It is not. It is plagued with severe problems, which is a fundamental design limitation because they haven't been able to cope with the design improvement. But I don't want to get into that one now because that's a different conversation. We can have that in a next session. Do we have radiation weapons? Kali, how much capable? What do you mean by Kali? I've never heard of this Kali radiation weapon. This is a mythology that has been going on for quite some time. They say that I'll tell you where it comes from. You know what the mythology is? One second. When you say an anti-radiation weapon, it is a misuse of the term. It's an anti-radar weapon. It's called the Wild Weasel Roll, of which there are only two weapons. There is the AS-17 Kilter, which is a Russian missile which we have, which has been seen on the Indian Sukhoi. And then there is the American HARM, high-speed anti-radiation missile, which is the two prevalent missiles. The Pakistanis use a sort of Fuddu kind of a Brazilian anti-radiation missile. That doesn't work either, very well either. Because see, to have a great anti-radar missile, which is called an anti-radiation missile, you need to have excellent electronic warfare collection capabilities. This is why even a Russian anti-radar missile will not have excellent capabilities because they don't collect electronic intelligence from the West like they used to. America continues to collect superb intelligence. Okay? So I don't know what you're referring to, but no, I'll tell you what he's referring to. No, Abhijit, one sec. I'll tell you what he's referring to. There is a myth that goes around. You must have heard about that Gayari landslide below the Saltoro Ridge, in which about 160, 170 Pakistanis died. They got buried under the landslide. So there is a myth that says that there was a radiation weapon called Kali, and that kind of caused that landslide. So that is the question. That question actually pertains to that. Will China resort to biological warfare? What do you think COVID is? I don't think it's deliberate. It's not biological warfare by commission, but it's biological warfare by omission. But remember, biological warfare has a certain connotation. You have to be able to weaponize a virus or whatever. I've not seen that ability yet. I mean, I keep my mind open about COVID.
Aren't American apps a threat too in the long run? No. And you know why? Look up this case that Apple fought in the US Supreme Court. It was a criminal. The FBI wanted Apple to give them the details. Apple refused to give the FBI details. And the Supreme Court upheld Apple's right to not share those details with the US government. That is called the rule of law. That is what exists in America, which does not exist in China. Okay. Now, will Twitter or Apple misuse it to fund their own social justice warrior agenda? Yes. Will they share it with the American government? No. So look at it from a different point of view there. Sachin Gupta, what percentage of jets can stay in the air while we service the rest of them on the ground? It depends on type. There's no fixed ratio. Generally, modern planes can stay up in the air longer, but there's no fixed ratio as such. It depends on climatic conditions, what your supplies are, what the wear and tear on it is, and things like that. Our Navy seems to be under-resourced for the task it is given. Can you comment on what is the status of the upgradation? Our Navy is under-resourced for a very simple reason, that with all our modernizations, Army, Navy, Air Force, we've gone off on a tangent. We buy status symbols rather than buying operationally useful things. So they'll be useful in the beginning, but after that, the erosion, we can't even exploit them 100%. Okay? So that is the problem there. Why isn't Dalai Lama making a statement? This is the last question. What if the two reconcile in the future? Dekho, Dalai Lama isn't going to reconcile with Beijing as far as I can tell. He's too old for that. He's alienated too many people in Beijing. Why should we get him to open his mouth? That is my question to you. Because look, it is quite clear now that China will choose the next Dalai Lama. Okay, there's nothing we can do about it. What we want is the Dalai Lama to now keep quiet and announce formally that he will be the last Dalai Lama. He will not be reincarnated anymore. Because we can't afford to give them a propaganda tool. So you support the Tibet cause, but right now I don't see any positives in getting the Dalai Lama to get on our side. What is it going to achieve anyway? It's just moral support, not worth it. The moral support then gives China the right to nominate the next Dalai Lama and gives him that ordained power. No. Very good idea keeping him out of the picture. So that's that. These are all the questions fired at you, and you've taken them head on, Abhijit. I request all my viewers that if you like the content that we've served, that please like and subscribe and share, and also press the bell icon so that you get notified in time. Thank you, Abhijit, once again for your witty and, as usual, forthright comments. Of course, we will come back with you and next time, because there's a lot of demand that people want to discuss every design feature of all the aircrafts. So if you feel up to it, then we can do that in the next edition. Let's do an Air Force session just discussing the aircraft. Yes, we'll do that. We'll do that soon. And thank you very much. Staying up late again. We bother you a lot, but we'll keep bothering you. Thank you. Jai Namaste Bhavani. and Har Har Mahadev.